in recalling the stalwarts of India's freedom, there is one name integral to the movement for sheer earnestness, single-minded commitment, and selfless contribution, and for making words into deeds. Jamnalal Bajaj, the man who participated in each of Gandhiji's programs of independence movement on the one hand and national reconstruction on the other. In doing so, he suffered protracted jail terms, solitary confinements, bodily injuries, and punitive fines. But it was in the implementation of Gandhiji's constructive programs that Jamnalal Bajaj played a stellar role. Whether it was women emancipation, Harijan welfare, propagation of khadi, preservation of cattle wealth through Go Seva, using Swadeshi, promoting cottage industries, or following business ethics and trusteeship, Jamnalal Bajaj not only actively organized these, but also created a nucleus of like-minded people, thus ensuring continuity of the activities. It was because of Jamnalal's pure devotion to Gandhian ideology that Gandhiji adopted him as his fifth son. In course of this journey, Jamnalal also found a guru in Vinoba Bhave and a spiritual mother in Ma Anandamayi. Following his footsteps, his wife, Janki Devi Bajaj, took to the path of renunciation, suffered imprisonment in the freedom struggle, and dedicated her whole life to propagate khadi, Go Seva, and Vinobha's Bhudan movement, adding a concept of Koopdan to it. In 1956, she was conferred the Padma Vibhushan. Likewise, his elder son, Kamal Nayan Bajaj, endeavored to fulfill his father's wish and gave a fillip to Gandhiji's constructive program. He fueled the industrialization of a free India and the spirit behind a quest for self-reliance. Jamnalalji's younger son, Ram Krishna Bajaj, was more of a corporate social leader than only an industrialist. He was among the founding fathers of the Council for Fair Business Practices. In 1977, he set up the Jamnalal Bajaj Foundation to serve the ideals for which Jamnalal had dedicated his life. Besides supporting various rural and some urban projects covering education, healthcare, sanitation, water management, environment protection, the foundation honors outstanding contribution of people engaged in social welfare and trusteeship practices on Gandhian lines through 4 annual awards. Jamnalal Bajaj Foundation started the 4 awards with the objective broadly of encouraging, recognizing and rewarding those outstanding people who have given their life and completely involved themselves in Gandhian activities, constructive activities, even application of science for rural development, and of course uplift of women and children. The 4th award, which was started about 20 years ago, is for propagating Gandhian values abroad. Each award carries a citation, a trophy, and a cash prize of Rs 10 lakhs. The affairs of the foundation are supervised by a board of trustees. A council of advisors, chaired by Dr. Arya Mashelkar, has been constituted to advise and guide the foundation in matters of operation of the schemes of the awards. Over the years, the Jamnalal Bajaj Awards have come to be respected as the most coveted ones in their respective fields. This is amply reflected in the multi-dimensional work of the recipients, the eminence of the members of selection panels, as also
the stature of the chief guests who presented the awards in the years gone by. The Jamnalal Bajaj Awards are thus a fitting tribute to Gandhiji and the man he adopted as his fifth son. The recipients of the Jamnalal Bajaj Awards 2019 are Bhavani Shankar Kusu, recipient of the award for outstanding contribution in the field of constructive work for 2019. सारा जीवन अंधकार में है यदि आकांक्षा न हो, सारी आकांक्षाएं व्यर्थ हैं यदि ज्ञान न हो, सारा ज्ञान अर्थहीन है यदि कर्म न हो, और सारा कर्म खोखला है यदि प्रेम न हो। और वो प्रेम का संदेश तो गांधी देते हैं, तो मुझे लगा कि गांधी के जीवन से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे प्रेम और रचना को लेकर के, अहिंसा को लेकर के कुछ काम करना चाहिए। तो उसके मुताबिक मैं जयपुर के उस समय डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर थे उनके पास गए। हमने उनसे कहा कि मैं इस तरह का एक मॉडल वेस्टलैंड डेवलपमेंट का बनाना चाहता हूँ, आप ये जो ज़मीन फालतू पड़ी है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमको दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ज़मीन हम देंगे। वो सब जगह मैं देख के आया और देखने के बाद यहाँ की सोयल और वाटर का सैंपल टेस्ट कराने के बाद मुझे लगा कि यहाँ कुछ पोटेंशियल है और यहाँ मुझे काम शुरू करना चाहिए। दो तरह से हम लोगों को जोड़ना शुरू किया। हमने साल में एक बार कम्युनिटी मीटिंग आयोजित की और दूसरा यूथ कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, और वो श्रमदान भी करते थे। 1984 में जब ग्राम भारती समिति का गठन हम लोगों ने किया तो कुछ गांधीयन विचार के लोग उसमें शामिल थे, कुछ लोकल एक्टिविस्ट थे और कुछ प्रोफेशनल्स भी थे जिनका एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, एक्सपर्टाइज थी बहुत सारी चीज़ों में। उन सब लोगों को लेकर के हमने एक कमेटी बनाई थी, और उसके बाद में हमने अपने जो प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज़ जो बनाई वो भी इसी दृष्टि से बनाई कि गांव में जो बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पीने का अच्छा पानी होना चाहिए, गांव में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, गांव के लोग स्वावलंबी हों, इस दृष्टि से हमको काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को फोकस करते हुए हमने संगठन ये बनाया। इसी के साथ साथ जब बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि हमारी एक स्कूल है इलाके में और वहाँ भी साधन नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, एक ही टीचर था उस समय, और लेकिन वो पूरी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन एक छोटे से टिन शेड के बने हुए कमरे में उनका वो स्कूल चलता था। और आज आप देखेंगे कि उस जगह जो एक कमरे का छप्पर में स्कूल चलता था, आज वो बड़ी बिल्डिंग करीब 20-25 कमरे या इससे भी ज़्यादा होंगे, टॉयलेट, बाथरूम, लाइब्रेरी सब कुछ है उसमें, और एक बड़ा स्कूल वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का बन गया। लेट देम लूज देयर लिम्स बट नॉट द डिग्निटी। भले ही उनके हाथ पैर कट जाएं, टूट जाएं, लेकिन उनकी डिग्निटी नहीं खत्म होनी चाहिए, और डिग्निटी काम करने में है। उनका नारा था, श्रम ही है श्री राम हमारा। तो वो श्रम उनको सिखाना चाहिए। मीनिंगफुली रिहेबिलिटेशन अगर लेप्रोसी पेशेंट का करना है तो वही कि वो अपनी कमाई खुद करे और उसके बाद अपना पेट भरे जीवन यापन करे। मेरे जीवन को जो दिशा दी है सबने, इसके लिए मैं सर के प्रति इतनी आभारी हूँ कि धन्यवाद शब्द तो बहुत छोटा होता है। मैं कई जन्म लेकर के भी जो इस जीवन में मुझे मिला है उसका कर्ज नहीं उतार सकती। मुझे एक दिशा मिली है और मेरे जीवन को धन्य कर दिया। मैं बहुत आभारी हूँ सर के प्रति। शत शत नमन सर को।
मेरा कहने का मतलब है कि गांव में जब आप जाएंगे और गांव के लोगों की समस्या आपके सामने आएगी तो आप एक को करते हुए बाकी को अवॉइड करके नहीं चल सकते। यू हैव टू एड्रेस ऑल दीज थिंग्स। नेचर को संरक्षित करते हुए मानवीय मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर एक सोसाइटी का निर्माण, ऐसा समाज बनना चाहिए। ये हमारा एक विज़न है जिसके लिए ग्राम भारती समिति काम कर रही है। Muhammad Imran Khan Mewati, recipient of the award for outstanding contribution in the field of application of science and technology for rural development 2019. मैं मोबाइल में टेम्पल रन खेलता हूँ और पबजी भी खेलता हूँ। I play Minecraft and watch YouTube videos about Minecraft. टिकटॉक यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप पे चैटिंग करता हूँ फ्रेंड के साथ। यूट्यूब यूज़ करता हूँ जिसमें कार्टून देखना मुझे पसंद है। हमें ये सोचना होगा कि आज के दौर के हिसाब से क्या हम स्मार्टफोन का प्रयोग शिक्षा में कर सकते हैं, क्या हम इन संसाधनों का प्रयोग बच्चों की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। और इसके बाद ये विचार आया कि क्यों नहीं स्मार्टफोन का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसे शैक्षिक संसाधन तैयार किए जाएं जिनका प्रयोग पढ़ाई में हो सके। आज के इस प्रतियोगिता के दौर में अगर हम देखें तो एक गाँव का विद्यार्थी जो गाँव के स्कूल में पढ़ता है और उसको फिर कोचिंग में जाना होता है, वहाँ पर कमरा लेके रहना होता है, तो ये बड़ा कठिन होता है कि वो उनके समान कंपटीशन कर पाए जिनको संसाधन अच्छे से मिल रहे हैं। और एक बात मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जो प्रॉपर टैलेंट है, ऑनेस्ट टैलेंट है, वह पूरे समाज की एक रीढ़ है, क्योंकि जो सही टैलेंट आगे बढ़ता है तो उसका फ़ायदा न केवल उस व्यक्ति को, उस बच्चे को मिलता है, बल्कि पूरे समाज को उसका फ़ायदा मिलता है। और इसी बात को देखते हुए हमने शिक्षा में सूचना तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया। पहले वेबसाइट्स बनाई, उसके बाद वेरियस ऐप्स बनाए। ये ऐप्स हमने इस आधार पर बनाए, जैसी क्लास हम पढ़ाते थे पहले प्राइमरी क्लासेज के ऐप्स बनाए, फिर सेकेंडरी क्लासेज के ऐप्स बनाए और कंपटीशन क्लासेज के भी ऐप्स बनाए। इमरान जी ने रिसेंटली अलवर शक्ति नाम की एक ऐप का भी इनोवेशन किया है। इस ऐप के माध्यम से वो अलवर ज़िले के सभी यूथ को पॉजिटिवली एंगेज करना चाह रहे हैं, पॉजिटिवली उनको इंस्पायर कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के इवेंट्स जो हैं वो उस सोशल मीडिया की ऐप के ऊपर उनको अवेलेबल मिलते हैं। मुझे दिशारी ऐप बहुत पसंद है क्योंकि इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट मिल जाता है। मॉर्निंग में आप उठते हो तो मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट होता है जो पूरे दिन आपको बहुत ही एनर्जी देता है। दिशारी ऐप के राजस्थान में 4.5 लाख यूजर्स हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, क्योंकि जब मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो कोई कहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, कोई बोलता है कि मेरे पास बुक्स नहीं है फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ये सब पढ़ के बहुत अच्छा फील होता है। हमने हिंदी माध्यम में कंटेंट को जनरेट किया है कि कम से कम उन विद्यार्थियों को सूचना तकनीक के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से शिक्षण सामग्री सही से मिल सके और वो उसका प्रयोग अपनी पढ़ाई में कर सकें। प्रारंभ से ही ये परिश्रमी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनका प्रारंभ से ही रहा है। इनका स्वभाव शुरू से ही रिजर्व नेचर का रहा है, कुछ न कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव करने का रहा है बचपन से ही। महात्मा गांधी जिन्होंने परोपकार को, सत्य को, अहिंसा को जीवन का मूल आधार बताया और जिनकी प्रासंगिकता आज भी इस दौर में बहुत ज़रूरी है, जबकि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि एक प्रतिस्पर्धा पैदा हो रही है, एक होड़ पैदा हो रही है। ऐसे दौर में महात्मा गांधी के सिद्धांत, महात्मा गांधी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणास्पद है। एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो सभी कक्षाओं के लिए, सभी विषयों के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा सके और वह फ्री हो। इसके साथ साथ एक ऐसे पोर्टल का निर्माण करना जिस पर विभिन्न भाषाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा सके और बच्चे घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकें, एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकें। अर्थात एक ऑनलाइन स्कूल, एक वर्चुअल स्कूल ऐप के माध्यम से हम उपलब्ध करा सकें। यह मेरी भविष्य की योजना है। Shaheen Mistry, recipient of the award for outstanding contribution in the field of development and welfare of women and children 2019. All
we can change how we think about education and really make the purpose of education not just finding a livelihood and having a better job yourself, but actually caring for other people and caring for the world. If we can raise a generation of kids that cares for the world, I believe that is the true purpose of education. The early days were very, very challenging and difficult. I didn't know how to manage children. Children would come in, run to the bathrooms, jump into the tubs, the sinks to try to get fully wet, run back to class, not really be interested in learning, but just interested in playing. So it was a lot of chaos in the early days. But one incredible thing was the kids wanted to keep coming back because this was a space where they were joyful, where they could be children and where they could really learn. I think the one thing about Gandhi that I've brought the most into my life and into my world is the idea that small acts that you do yourself, acts of love, acts of kindness, acts of trying to take a step forward in making the lives of other people and those around you a little bit better in whatever way you can. I think this has been the biggest part of Gandhian philosophy that I am trying to imbibe in my own life. Our team has really worked to create impact at multiple levels, but the two things that stand out the most to me, one is how our children have become empowered, caring citizens. If you saw our children before Teach for India and through the experience of being taught by the fellows, you will see kids who care about themselves, each other, and the world. Fellowship is giving opportunities to promising individuals or people who really have the potential just to help and serve as full-time teachers in low-income communities and schools that don't really have all the infrastructure or the resources they need. The second thing that makes me really proud is that Teach for India, we set out to really create a pipeline of people who would go into the education sector and stay in the education sector to try to change it from within. And they are everywhere across the country. They're working in Naxalite Chhattisgarh, they're working with the government in Delhi, they're working to lead schools in Pune, they're working as teachers, they're working as curriculum heads, teacher trainers. That's really been our vision, that can we have people go across the education sector and really work together for children. Sonia Diato, recipient of the International Award for Promoting Gandhian Values Outside India, 2019. Sonia Diato, an Italian social artist, came to India in 1999 to explore the concepts of mandala and the universal archetype for peace and harmony. Thus began her journey of self-discovery as well, after her meeting with His Holiness Dalai Lama. Subsequently and gradually, she deepened the work of Mahatma Gandhi to create the commonness of humanity. In this process, a participatory research was developed by Sonia Diato with the contribution of different communities of India and indigenous people of Mexico, which led to the formation of Aura World Mandala. Aura in Latin means invitation to pray. World is our planet and its human continent, and mandala in Sanskrit means circle. It is a global peace movement to promote the art science of mandala with a vision of Sarvodaya being the ultimate goal. Practicing ahimsa, reconciliation as the first step, art science of mandala being the medium, and truth the first vow. She fosters a culture of peace through education, sustainable economy and social development, human rights, equality between women and men, democratic participation and solidarity, participatory communication, and international peace and security.
The art and science of a world mandala is a way to express the interdependence among all beings. Sonia Diato's long-drawn association with Gujarat Vidyapeeth led to her findings of the effectiveness of the integration of ahimsa and art. She strives to connect India with Mexico while experimenting at the antipodes with the tenets of Gandhian principles of truth and non-violence. Sonia uses art and activism to spread the practice of ahimsa and upholds cohesion among people through creative peace actions for unity, constructive work and satyagraha, with courage and perseverance against the backdrop of social and environmental malpractices like natural resource destruction and narcotic trafficking. Sonia Diato propagates ahimsa on a common platform with a positive impact. Training artists of ahimsa volunteers to form mandala peace actions. Effective adaptation of research outcome to the rural and urban education models. Concept of Khadi art to propagate collective community actions. Conflict resolution, with the most recent one being the first trans-border US-Mexico peace experiment, have been some of her many initiatives. The activities also generate interchange programs across Mexico, Italy, and India. As also, Sonia Diato's body of work includes Introduction to Gandhian Literature in Spanish for the benefit of the Mexican commoner. Sonia Diato innovatively contributes to awaken moral conscience, encourages community self-reliance, and brings harmony of human life with nature to build a peace bridge among different sectors and regions in the global arena. And the chief guest of the Jamnalal Bajaj Awards 2019 is Sadhguru, founder, Isha Foundation.